Now, this is a second important title from the plant breeding part of the chapter Strategies for Enhancement in Food Production. Now, see, Green Revolution is a proud story actually for every Indian. So, first of all, let us create a background for what Green Revolution is to understand it in a right way. See, in 1947, we got independence. 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली. But a bad incident took place and that is of a partition. म्हणजे एकीकडे 1947 साली आपल्या देशाला जेव्हा स्वतंत्र भेटलं, दुसरीकडे एक वाईट घटना अशी झाली की देशाची फाळणी झाली. और जो उपजाऊ भूमि थी, जैसे पूर्वी बंगाल जहाँ आज बांग्लादेश है, सम पार्ट ऑफ पंजाब एंड सिंध प्रांत, ये तीनों मिलके पाकिस्तान नाम का देश बना. तो हमारी जो उत्तम भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, वो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान को मिल गई. अब हुआ ये कि population is ever increasing, but with the limited land we were not able to produce enough food to feed the ever increasing population. बघा, 1947 साली स्वतंत्र भेटलं आणि देशाची फाळणी झाली आणि आपली जी उपजाऊ भूमी होती आपल्याला ती पाकिस्तानला द्यावी लागली. तर सीमित आपल्याकडे शेती योग्य ज़मीन राहिली और इतनी सी ज़मीन जो सीमित है, जहाँ खेतीबाड़ी हो सकती, कहने का मतलब मेरा ये था, उस सीमित भूमि से इतना अनाज हम नहीं पैदा कर रहे थे कि हमारी बढ़ती आबादी को खिला सके. एंड द रिजल्ट वॉज वी गॉट डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स. सो वी वे इम्पोर्टिंग द ग्रेन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड along with that grain, that gajar grass, carrot grass, Parthenium species, it got introduced in our country, which is ubiquitous, a headache for the country now. तो सर, आपने कहा कि एक तरफ सीमित हमारे पास उपजाऊ भूमि थी या खेती योग्य भूमि थी और आबादी जो है वो बढ़ रही थी, तो हमारे पास उतना फूड ग्रेन्स नहीं था कि हम बढ़ती आबादी को खिला सके, और इसीलिए हम लोग इंपोर्ट करते थे. उसमें हमारी फॉरेन करेंसी भी जाती थी. मतलब देश की रोटी जो है वो बाहरी देश से हमें बुलानी पड़ती थी और इसमें हमें उनको फॉरेन करेंसी देनी पड़ती थी. और ये जो इम्पोर्टेड व्हीट था, उसी के साथ हमारे देश में ये कॅरेट ग्रास, पार्थिनम स्पीसीज आई, जी आजची डोकोदुखी आहे. गाजर गवत ज्याला आपण म्हणतो, कॅरेट ग्रास म्हणतो किंवा पार्थिनम स्पीसीज. तो with a limited land to feed the ever increasing population of the country was really a nerve-wracking task. एक स्ट्रेसफुल सिच्युएशन होती की एवढ्याशा जमिनीमधून अन्नधान्य पिकवून देशाच्या लोकसंख्येचं पोट कसं भरावं. उसमें भी ड्रॉट सिच्युएशन थी, फेमाइन्स थे, भूखमरी से लोग मर रहे थे. और देखो, विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन द डिकेड ऑफ 60 to 70 वी अचीव्ड ग्रीन रेव्होल्यूशन. एकीकडे अशा परिस्थितीमध्ये जिथं आपल्या देशाचं अन्नही बाहेरून येत होतं, तर प्लांट ब्रीडिंग की मदद से, उसका उपयोग करके 1960 से 1970 के दशक में भारत ने हरित क्रांति लाई. तो सर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट ग्रीन रेवोल्यूशन? सी, वेरी प्राउडली इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स. नॉट ओनली वी कुड मेंटेन the national requirement of the food,
but also India is a largest exporter of the grains now. हरित क्रांतीमुळे आपल्या देशाच्या जनसंख्येला लागणारं अन्न तर आपल्याकडे आहेच, पण आपण आता निर्यात करतोय, एक्सपोर्ट करतोय फूड ग्रेनची. हे सगळं काही झालं ग्रीन रेव्होल्यूशनमुळे आणि त्याचं श्रेय मॅक्झिमली आपण देऊ शकतो. देर आर मेनी फॅक्टर्स दॅट कॉन्ट्रीब्युटेड ग्रीन रेव्होल्यूशन. वी आर गोइंग टू लिस्ट देम in the title how it is achieved, but it is mainly because of the improved varieties of rice, wheat, millets, etc. तो सर अब ये तो समझ में आ गया कि आबादी एक तरफ बढ़ रही थी, ज़मीन हमारे पास सीमित थी, हमारे पास सफिशिएंट ग्रेन्स नहीं थे, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था. और जैसे आपने कहा 1960 से 1970 के दशक में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अचीव की है और आज हमारी नेशनल फूड रिक्वायरमेंट तो मीट होती ही है, फुलफिल होती है, हम लोग एक्सपोर्टर भी बन गए. ये हुआ कैसे? तो सी द शॉर्ट स्टोरी. इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, लोकेटेड एट सोनारा, मेक्सिको. वहाँ पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग वॉज अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट बेसिकली वर्किंग ओवर देयर. म्हणजे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, who is regarded as a father of international green revolution, was basically a plant pathologist and not a plant breeder. But he turned to be the great plant breeder of the era, I could say, not exaggeration. म्हणजे डॉक्टर बोरलॉग हे एक प्लांट पॅथॉलॉजिस्ट होते. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर व्हीट अँड मेज इम्प्रूव्हमेंटमध्ये ते एक पॅथॉलॉजिस्ट म्हणून काम करत होते. आणि हा एक महान व्यक्ती, हा या युगाचा आपण म्हणू शकतो एक महान प्लांट ब्रीडर कसा झाला. वेन ही हॅज सीन दॅट Mexican varieties were tall, so they were susceptible to the lodging. म्हणजे मेक्सिकोचा जो गहू होता तो उंच होता, जोरात हवा आली की तो झोपून जायचा आणि सोन्यासारखा गहू हा मातीत जायचा. तो उन्होंने एक टारगेट किया कि हमें सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ चाहिए, हमें ड्वार्फनेस नाम का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना है. दूसरा, brown rust of wheat caused by a fungus Puccinia gramini triticei. तो गहावरती तांबेरा नावाचा एक रोग येतो. तो गेहूं के हरे पत्तों के ऊपर चॉकलेटी रंग के धब्बे पड़ते हैं, ब्राउन रंग के, जिस वजह से ग्रेन साइज छोटी होती है, रिडक्शन इन ईल्ड होता है. ये एक प्रॉब्लम था. सो उन्होंने कहा कि लेट अस डेवलप द व्हीट वैरायटीज which should be lodging resistant, that is semi dwarf, and resistant to the brown rust. And he developed in 1960s the semi dwarf Mexican wheat resistant to the rust, and that brought green revolution internationally. In India वी वेर डिपेंडंट ऑन इम्पोर्ट. म्हणजे एकीकडे जगामध्ये हरित क्रांती होत आहे आणि आपल्या देशाला आयात करावं लागतं आहे. तो मिस्टर बोरलॉग व्हिजिटेड आवर कंट्री अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द PM हियर और अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द IARI. When he had a round of the country, he said, you got a plenty of water, plenty of sunshine, plenty of fertile land. The lacking is the improved varieties. You have to increase the doses of fertilizer and plant protection measures. म्हणजे तुमच्या देशाकडे स्वच्छ सूर्यप्रकाश आहे, प्रचंड पाणी आहे आणि एकदम उपजाऊ भूमी आहे. जी कमतरता आहे भारताकडे ती आहे सुधारित वाण म्हणजे चांगल्या व्हरायटीची, खतांची मात्रा वाढवावी लागेल आणि प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स घ्यावे लागतील. म्हणजे स्प्रेइंग, डस्टिंग ह्या मेजर्स घ्यावं लागतील. तो जहाँ तक मैं जानता 100 kgs
सिर्फ 100 kg wheat they have given to India. Later on we have also imported those varieties from Mexico, but initially some 100 kgs were given to us. तो आपल्याला मेक्सिकन व्हरायटीज त्यांनी दिल्या आणि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, हु इज रिगार्डेड ॲज अ फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेव्होल्यूशन, म्हणजे भारतीय हरित क्रांतीचे प्रणेते ज्यांना आपण म्हणतो, डॉक्टर स्वामीनाथन यांच्या प्रयत्नांनी वो जो वैरायटी मेक्सिको से आई, इट इज़ सोनारा 63, सोनारा 64, लर्मा रोहो 64A, सफ़ेद लर्मा, उसमें से अच्छा सिलेक्शन किया गया और भारत ने कल्याण सोना, सोनालिका ये वैरायटीज़ डेवलप की एंड द सीड्स ऑफ द इम्प्रूव्ड वैरायटी वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. लाल बहादुर शास्त्री वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ॲट दॅट टाइम. म्हणजे शास्त्रीजी आपल्या देशाचे पंतप्रधान होते त्यावेळी. तो किसान बंधुओं को अच्छा बीज मिला, फर्टिलाइजर्स दिए गए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिली, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, और फिर इंडियन व्हीट प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज मैनीफोल्ड अँड इंडिया विटनेस ग्रीन रेव्होल्यूशन इन व्हीट. म्हणजे गव्हाच्या उत्पादनात विक्रमी वाढ आपल्या देशामध्ये. शेतकरी बांधवांची मेहनत, चांगल्या व्हरायटी, खताच्या मात्रा, कीटकनाशकांचा वापर आणि सिंचनाच्या सुविधा या सगळ्यांमुळं गव्हामध्ये हरित क्रांती घडून आली. राइस की बात करें तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इरी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इरी, मनीला फिलीपींस, वहाँ से IR8, ताइवान से ताइचुंग नेटिव 1, ये वैरायटी भी हमने इंट्रोड्यूस की और उसमें से जया, रत्ना, विजया, पद्मा, कांति, जयंती ऐसी वैरायटीज़ हमने बनाई. एंड वी हैव आल्सो अचीव्ड अ ट्रिमेंडस मैनीफोल्ड प्रोडक्शन ऑफ राइस इन आवर कंट्री एंड इंडिया बिकेम self-sufficient in food grains, and that's the story called green revolution. So what is the definition or meaning of green revolution? Tremendous increase in food grain production due to use of improved varieties, doses of fertilizer, irrigation methods, plant protection measures, also expansion of the land under agriculture, double cropping is called ग्रीन रेव्होल्यूशन. म्हणजे अन्नधान्याच्या उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली. कशाने? इम्प्रूव्ड व्हरायटीज, डोजेस ऑफ फर्टिलायझर, इरिगेशन मेथड, प्लांट प्रोटेक्शन मेथड्स, एक्सपांशन ऑफ द फार्म लैंड, माने खेती योग्य भूमि जो सीमित थी उसको हमने बढ़ाया. उसी ज़मीन में दोबार हम लोग पीक मतलब फसल लेने लगे. इस चीज़ों की वजह से जो एक ट्रिमेंडस इंक्रीज हुआ फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, आल्सो इन इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन. तो सर आपने इंडियन इकोनॉमी की बात करी, तो व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी? तो सी, इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी. भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. 33% ऑफ द GDP इज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर. मतलब हिंदुस्तान के पास अगर 100 रुपये है तो 33 रुपये जो आते हैं वो कृषि क्षेत्र से आते हैं. बट दिस बिजनेस इज एम्प्लॉइंग 60% ऑफ द पॉपुलेशन. दैट बैलेंस इज एक्चुअली इम्बैलेंस. मतलब समझा नहीं सर? तो देखो, जिस काम में 60% आबादी हमारी जुटी है, ज्या कामामध्ये 60% लोक गुंतले आहे, त्या कामामधनं जे आपलं उत्पन्न येतं आहे ते 33% आहे. जे डेव्हलप कंट्रीज आहे ना,
त्यांचा ॲग्रिकल्चरचा शेअर कमी असतो आणि इंडस्ट्रीज टेलिकम्युनिकेशन ह्याचा जास्ती असतो. बट एनिवे दॅट इज इकॉनॉमिक्स. वी डोंट वॉन्ट टू गो इन डेप्थ, म्हणजे तो आपला विषय नाही. बट एनिवे इंडिया इज अ ॲग्रो बेस इकॉनॉमी अँड ॲग्रिकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट टू 33% ऑफ द GDP and employing the 60% of the population there. तो ये एक सर्ज आ गया था इंडियन इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. सो हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन इज अचीव, टू whom you would like to attribute in green revolution of the country? तो सर, improved varieties, high doses of fertilizer, irrigation facilities, plant protection measures, expansion of the land suitable for agriculture, double cropping. ये जो जय जवान जय किसान, ये जो घोषणा है वो शास्त्री जी ने उस वक्त दी है जिस वक्त हमारे ऊपर पाकिस्तान चीन का आक्रमण हुआ था और हम लोगों को फूड ग्रेन्स भी बढ़ाने थे. अन्नधान्याचं उत्पन्नही आपल्याला वाढवायचं होतं आणि या शत्रूशी आपल्याला टक्करही द्यायची होती. तेव्हा शास्त्रीजींनी ही जी स्लोगन आहे, जी घोषणा आहे ती दिली होती, जय जवान जय किसान. तो सुनो, हमने हाव अचीव्ड भी देखा. अब चलो व्हीट की बात करते. तो जस्ट वी हैव डिस्कस कि मेक्सिकन सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़. तो सर वो डॉक्टर बोरलॉग ने सेमी ड्वार्फ वैरायटी कैसे बनाई? तो एक नॉरियन 10 नाम की ड्वार्फिंग वैरायटी है, वो जीन है ड्वार्फिंग जीन नॉरियन 10. तो दैट जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू मेक्सिकन व्हीट अँड द टॉल व्हीट बिकेम सेमी ड्वार्फ. तो डॉक्टर बोरलॉग साहेबांनी नॉरियन 10 नावाच्या व्हरायटीसोबत मेक्सिकन व्हीट क्रॉस करून त्यांचा व्हीट त्यांनी सेमी ड्वार्फ केला आणि त्या व्हरायटीज आपल्या देशात आल्या 63मध्ये. आणि आपण त्याच्यातनं कल्याण सोना, सोनालिकासारख्या व्हरायटी काढल्या. पुढे मग शरबती सोनारा तयार झाली, सफेद लरमा तयार झाली आणि आपण ग्रीन रेव्होल्यूशन अचीव केलं. तो सुनो, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ॲग्रिकल्चर, द पिरियड फ्रॉम 1960 to 2000 इज रिअली मेमोरेबल पिरियड. म्हणजे भारतीय कृषी क्षेत्रासाठी 1960 ते 2000 हा 40 वर्षाचा सुवर्ण काळ आहे. कारण आपलं गव्हाचं जे उत्पन्न होतं 11 मिलियन टन्स, ते झालं 75 मिलियन टन्स, अप्रॉक्सिमेटली 7 टाइम्स इन 40 ईयर. इन व्हीट, तो जैसे मैंने कहा इरी, मनीला फिलीपींस, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से IR8 एंड ताइचुंग नेटिव 1 आई. उसमें से हमने जया रत्ना, हाँ नीट क्वेश्चन है, जया रत्ना आर द वैरायटी ऑफ राइस. जया रत्ना, पद्मा, विजया, कांति, जयंती, ये वैरायटीज़ हमने निकाली. और हमारा चावल का, राइस का, धानाचं उत्पन्न 35 मिलियन टन्स टू 89.5 मिलियन टन्स हो गया, 2.5 टाइम्स इन दोज 40 ईयर्स. देखो, ये तो व्हीट और राइस की बात हुई. अब शुगर केन की बात करें. इन नॉर्थ इंडिया, द शुगर केन स्पीसीज कॉल्ड नॉर्थ केन इज सॅकॅरम बार्बेरी. उत्तर भारतात जो ऊस आहे तो आहे सॅकॅरम बार्बेरी. इट इज लो इन यील्ड एंड शुगर कंटेंट. तो सर आपने कहा कि उत्तर भारत में जो गन्ना है उसका नाम सैकरम बारबेरी है, तो उसका यील्ड भी कम है और उसमें शुगर कंटेंट भी कम है. दूसरी तरफ द साउथ केन कॉल्ड सॅकॅरम ऑफिसिनॅरम, म्हणजे दक्षिण भारताचा जो ऊस आहे ज्याचं नाव सॅकॅरम ऑफिसिनॅरम आहे, इट इज हाय इन यील्ड अँड शुगर कंटेंट आल्सो. म्हणजे त्याचं उत्पन्नही जास्त आहे, साखरेचा उताराही जास्त आहे. तो सर ऐसा क्यों नहीं करते कि सॅकॅरम ऑफिसिनॅरम दैट इज अ साउथ केन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ इंडिया. बट इट डिड नॉट ग्रो वेल देयर, इट बिकेम ससेप्टिबल. माने दक्षिण भारत का जो गन्ने की फसल है सैकरम ऑफिसिनॅरम, जिसकी यील्ड ज़्यादा है, शुगर कंटेंट ज़्यादा है, उसको उत्तर भारत में क्यों नहीं ले जाते?
तो वहाँ वो परफॉर्म नहीं करता। अब क्या करे, तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटोर, आई थिंक डॉक्टर वेंकट रामन, सो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट एट कोयम्बटोर, सो वहाँ प्लांट ब्रीडर ने सैकेरम बार्बेरी को सैकेरम ऑफिसिनारम के साथ क्रॉस किया। दिस इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, एंड दे डेवलप्ड such varieties which are high in yield, high in sugar content, and that do well equally in north and south part. Today India is a second largest producer of raw sugar. We stand second. So this is how the green revolution is achieved in sugarcane, and the varieties there are, they have a prefix co for Coimbatore, CO419, CO421, CO740, CO453. So these CO stands for Coimbatore. तो पहा, आपण गव्हाच्या उत्पादनात विक्रमी वाढ केली, तांदूळाचं उत्पन्न वाढलं, साखरेचं उत्पन्न वाढलं. आता मिलेट्स मीन्स the grasses yielding small seeded grains, म्हणजे ग्रामीणी फैमिली के ऐसे क्रॉप्स जिनके छोटे दाने होते हैं, जैसे जवार, बाजरा, मेज, सो विच आर आवर स्टेपल फूड. तो in those millets also we achieved green revolution. There the target was to develop the hybrid varieties which are resistant to water stress, high yielding. So this is how we achieved a green revolution. So it's a proud story. आपल्या देशाने हरित क्रांती केली. जो देश आयात केलेल्या अन्नधान्यावर उपजीविका करायचा, तो आता निर्यातदार झालाय. Total food grain production of our country, so you'll feel proud, is 250 million tons. 250 million tons means it is sufficient for coming 5 years. So this is all about that story of green revolution. नीट परीक्षेच्या दृष्टीने तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे? व्हीट व्हरायटीज, राईस व्हरायटीज, शुगर केनच्या 2 स्पीसीज. बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसा क्वेश्चन आ सकता कि राइट अ नोट ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन. व्हाट इज द अचीवमेंट इन व्हीट, राइस, शुगर केन एंड मिलेट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? So when did India achieve green revolution? Between 1960 to 1970s. Now our next lecture will be very important. It will be plant breeding for disease resistance and pest resistance. तो सर इसके पहले हमने जो प्लांट ब्रीडिंग देखा वो द मेथड विल बी सेम. ऑब्जेक्टिव बदल जाएगा. अब हमें हाई यील्ड नहीं चाहिए, हम फार्मर की डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं ऑन पेस्टिसाइड्स. थैंक यू.